वेलकम टू दिल्ली लेट्स प्ले। दोस्तों, स्पोर्ट्स और इंजरी हमेशा से साथ साथ चली है। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हुए हैं जो इंजरी की वजह से कई बार रिकवर नहीं कर पाए और उनका करियर जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। हमने देखा था कि कैसे 2016 में विनेश फोगट को भी ये इंजरी की वजह से उनका करियर जो है एकदम से डामाडोल हो गया था, लेकिन एक अच्छा उनको रिहैबिलिटेशन मिला, फिजियो मिले, उनका इलाज हुआ और उन्होंने जो कमबैक किया वो काबिल तारीफ़ थी। लेकिन हर एक प्लेयर को ऐसा एक बेनिफिट नहीं मिल पाता और वो उनका करियर चौपट हो जाता है। तारीफ करनी होगी खो खो महासंघ को, जिन्होंने हाल ही में एक नेशनल कैंप लगाया है मानव रचना यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में और साथ में गुरुग्राम एसजीटी यूनिवर्सिटी में। ये दोनों जगहों पर जो नेशनल कैंप लगाया है उससे जो खो खो के प्लेयर्स हैं उनको बहुत मदद मिल रही है। उनको बताया जा रहा है कि कैसे आप स्पोर्ट्स साइंस के थ्रू अपने आप को इंजरी से बचा सकते हैं और आपको किस तरीके का न्यूट्रिशन चाहिए जो आपको एक मदद कर सकता है। Kho-Kho Federation of India is really proud to have undertaken this enormous job of setting up a national camp for its players, which will compare to anything worldwide. It's our belief that the critical difference between excellence and podium is sports sciences. And keeping this in view, we have had the top cream of Kho-Kho players of India undergo a training camp of 1 month to not only brush up their skills as players, but to actually do scientific training. First and foremost is the assessment. There is a complete body assessment of each athlete in terms of the muscles, the strength, the weaknesses, the flexibility. All parts of the body have been evaluated on the biomechanical parameters, and identifying which muscles and which parts of the body need to be strengthened. Once that identification has been done, the training program has been tailor-made for each athlete, keeping in view his particular requirement. It's not a general program, it's a specific player-oriented program. Similarly, nutrition and diet is a very critical area which has been long neglected. The nutritionist has analyzed each player in terms of the nutritional requirements. How much protein, how much calcium, iron, carbohydrates, various components of food which are required for a particular athlete in terms of his body structure, in terms of his, calorie consumption and all. And then keeping in view the regional food he's been used to consuming, especially dietary plan has been made for each individual. So all in all, the camp focuses on planning scientific measures for each individual separately and not a general collective training program. This would go a long way in enabling each individual to flourish, to realize his true potential and bring out his best.